और ये हर रोज ही बढ़ता जा रहा है, करेक्ट। बट कमिंग टू द कमोडिटी सेगमेंट, कमिंग टू द कमोडिटी मार्केट, वी आर हैविंग वेरी लिमिटेड स्क्रिप्ट्स टू बी फोकस्ड ओवर हियर. For an example, gold and silver comes under bullion, aluminium, copper, lead, nickel, zinc, it comes under base metal, crude oil and natural gas, it comes under energy section. We are just having 8 to 9 script to be focused over here. Sanjeev sir, why you can't see my screen? Everyone can see my screen. Come on, sir. You just need to re-log in yourself, or you, Gursej, you can just give the focus to the screen so that there won't be any sort of issues like that. Gursej, yeah. Please make sure that everybody can see the screen. Great. Now, listen carefully. I don't want any questions in between. I just want you people to be focused over here. Question window तो मेरे सामने open ही रहेगा क्योंकि मुझे सबके answers read करने हैं. So I can't miss on that. तो question window open रहेगा पर मुझे divert मत करना and don't put up the questions which are not related to the topic because I have a wrong habit to read all the questions in the question window. मैं सभी questions पढ़ लेती हूँ. So let us not break the flow. So that is actually the negative point. What do you all see? Is it a negative or a positive point? Come on. Yeah, both. That's cool. That's cool. Now I'm already getting good replies. So now listen carefully. Here in the commodities, we are just having 8 to 9 script to be focused. खाली 8 से 9 commodities है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए. And इसमें अगर आप खाली एक ही commodity पे ध्यान रखोगे, from this 8 to 9 commodities, if you are just focusing on the single commodity like a crude oil, natural gas, any one commodity, then also you can easily achieve all your target. आपके जो भी टारगेट है ना, आप आराम से एक ही कमोडिटी में से निकाल सकते हो. वॉट एवर इज योर टारगेट, उसका मतलब क्या होता है, मतलब इफ यू आर टारगेटिंग 10,000 रुपीज ऑफ द प्रॉफिट पर डे, or if you are targeting 1 lakh rupees of the profit per day, whatever is your target, you can get it by just focusing on the single commodity. That is the potential of trading in commodities. Okay, we are just having 8 to 9 commodities to be focused. Our focus doesn't get diverted over here. यहाँ पे हजारों स्क्रिप्ट नहीं है, खाली 8 से 9 स्क्रिप्ट है. हमारा फोकस यहाँ पे डाइवर्ट नहीं होता है और वो सबसे ज्यादा फायदा करता है. Our focus doesn't get diverted and we can just mint a good amount of money by focusing the single commodity. Commodity market starts early in the morning 9 a.m. सुबह 9 बजे मार्केट चालू होता है और रात को 11:30 बजे तक ये मार्केट चालू रहता है. It works for almost 14 plus hours a day. See, this is the daily chart of the gold. Can you all see? It is a investing.com which I open in front of you all. Can you all see the gold chart? Come on, come on. Nobody is going to be lazy today. I need a quick replies from all of you. Do you all know this is the global chart? It works for 23 hours a day. ये 23 घंटे के लिए चलता है. And it is sleeping just for 1 hour. As per Indian timings, it is sleeping just for 1 hour, 2:30 a.m. to 3:30 a.m. as per Indian timings. ओके, सो इट वर्क्स फॉर 23 आवर्स अ डे. मतलब कि अगर आपके पास ग्लोबल अकाउंट है, अगर आपका कोई फ्रेंड और रिलेटिव फॉरेन में रिसाइड करता है, एंड इफ यू आर हैविंग अ ग्लोबल अकाउंट, यू कैन इवन ट्रेड इन द ग्लोबल मार्केट इनटू दिस कमोडिटीज एंड कैन मिंट प्रॉफिट इन यूएस डॉलर. दिस कमोडिटीज, जो भी 8 से 9 कमोडिटीज मैंने आप लोगों को यहाँ पे एमसीएक्स वेबसाइट पे दिखाई है, वो खाली इंडिया में नहीं ट्रेड होती है. सबसे पहले तो वो पूरी दुनिया में ट्रेड होती है. ओके, सेकेंड थिंग, ये हमारे जो एमसीएक्स के चार्ट है. फॉर एन एग्जांपल, आई एम जस्ट ओपनिंग द क्रूड ऑयल चार्ट ओवर हियर. दिस इज द क्रूड ऑयल डब्ल्यूटीआई चार्ट. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट इट इज द हाईएस्ट ट्रेडेड स्क्रिप्ट इन द कंप्लीट वर्ल्ड. पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली स्क्रिप्ट है ये क्रूड ऑयल ग्लोबल चार्ट. हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? आप में से कितने लोगों को ये पता है? Yes, it is the highest traded script in the complete world. Okay, and now whenever you compare this global chart to the MCX chart, यहाँ पे मैंने global chart open किया है, and now I am opening. That's wonderful, Ashish sir, Ankit sir. So many members are already knowing this, and that's amazing. और बाकी सब भी रिप्लाई कीजिए प्लीज. रिप्लाई करोगे तभी तो मुझे भी मजा आएगा, अदरवाइज इट विल बी टू बोरिंग फॉर मी. This is a live session, right? It should be interactive. See now, all of you look over here.
This is the MCX global chart. Can you all see this? And this is the MCX. This is the Indian MCX chart and this is the global chart. दोनों का डेली चार्ट ओपन किया है मैंने और यहाँ पे ये 23 घंटे के लिए चालू रहता है एंड दिस इज वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 14+ आवर्स अ डे. दिस इज वर्किंग फॉर ग्लोबल चार्ट 23 घंटे के लिए चलता है और ये 14 घंटे के लिए चलता है. इज बोथ द चार्ट मेकिंग सेम पैटर्न? दोनों ही चार्ट सेम पैटर्न बना रहे हैं कि नहीं? So this is again a beauty of trading in commodities. ये सबसे बड़ा फायदा है commodities में ट्रेड करने का. मतलब कि जब भी हमारा मार्केट बंद रहता है रात को 11:30 बजे के बाद या सुबह 9 बजे के बाद भी अगर आपको चेक करना है कि ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर द डे, हाउ यू कैन इजीली मल्टीप्लाई योर कैपिटल, यू कैन चेक इट इन द ग्लोबल चार्ट एंड कैन एंजॉय और कैन प्रिपेयर द लेवल्स क्वाइट इन एडवांस. आप एडवांस में अपने लेवल्स प्रिपेयर कर सकते हो और उसके ऊपर काम कर सकते हो. ग्लोबल चार्ट का आप लोग फायदा उठा सकते हो. इज दैट क्लियर? Yes, and along with this, if you people are trading in equity, you would be knowing that one or two proprietor of the company can manipulate the prices of that particular script to satisfy their personal agenda. Am I right? अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो तो एक या दो प्रोप्राइटर जो रहते हैं कंपनी के वो प्राइसेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं कि नहीं खुद के फायदे के लिए? Can they manipulate the prices of that particular company to satisfy their personal agenda? Yes, but this sort of manipulation is not possible in commodities because ये commodity तो सबसे पहले पूरी दुनिया में ट्रेड होती है. Okay, it is traded worldwide. Crude oil, we all would be using some or other form of the crude oil in our daily life. हम सभी लोग कोई ना कोई फॉर्म में crude oil को यूज कर रहे होंगे. We would be using it in the form of the diesel, petrol, etc. Natural gas is a highly used in heaters. ऑल दिस बेस मेटल्स कॉपर एल्यूमिनियम ये सभी तो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं. सिल्वर भी इंडस्ट्रीज में यूज होता है. तो कोई एक दो बंदा यहाँ पे मिल के प्राइजेस को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है. प्राइजेस यहाँ पे मैनिपुलेट नहीं होती है. मैनिपुलेशन ओवर हियर इज ऑलमोस्ट नियर टू निल एंड बिकॉज ऑफ दैट टेक्निकल्स वर्क लाइक अ मैजिक ओवर हियर. यहाँ पे टेक्निकल बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है. इफ यू आर ट्रेडिंग इन इक्विटी यू वुड बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ द टेक्निकल नॉलेज. थोड़ा बहुत फंडामेंटल सीखते होंगे और फिर बाद में उसमें ट्रेडिंग करके पैसा बनाते होंगे. एम आई राइट? The sort of technical knowledge whatever you are gaining in equity segment, if you are gaining that same sort of knowledge in commodities you will be getting the far better result than any other segment because technicals work like a magic over here. अभी मैं फिर से समझाती हूँ थोड़ी बहुत चीजें. देखो मैं अभी यहाँ पे जीरोधा ओपन करके दिखाती हूँ. दिस इज अ जीरोधा एंड दिस इज द एमसीएक्स चार्ट. ओके, नाउ हियर दिस इज क्रूड ऑयल चार्ट विच आई ओपन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. सभी को दिख रहा है क्रूड ऑयल का चार्ट एंड ये मैंने अभी जीरोधा ओपन किया है. एज पर टेक्निकल्स इट वर्क लाइक मैजिक. अगर आप इन ये सभी चार्ट को शांति से आराम से देखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड दैट ऑन अ डेली बेसिस वी आर गेटिंग अमेजिंग मोमेंटम, अमेजिंग लिक्विडिटी एंड very good what I would say that the momentum or the activity level is too good over here. Volumes are too good and this commodities flexi timings मतलब इस सुबह 9 से लेके रात को 11:30 बजे तक मार्केट चालू रहता है. टेक्निकल्स भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और ये सब तो अभी पता चल गया. संजीव सर चार्ट भी बड़ा कर दूंगी और ये सब तो पता चल गया. अभी थोड़ा बहुत समझ लेते कि पैसे कितने लगते इसमें ट्रेडिंग करने के लिए. व्हाट इज द प्रीमियम रिक्वायरमेंट टू ट्रेड इन कमोडिटीज. then we'll be going to the other pointers. What do you all say? See commodity में अगर ट्रेड कर रहे हो ना तो फिर से मैं यहाँ पे M6 की वेबसाइट ओपन करके दिखाती हूँ. that crude oil, yeah, crude oil में भी क्रूड ऑयल मिनी कॉन्ट्रैक्ट है. एनजी में भी मिनी कॉन्ट्रैक्ट है. सभी बेस मेटल्स में सेबी इटसेल्फ हैज केम अप विद द मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स इन ऑल द कमोडिटीज.
सिल्वर में भी आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कर सकते हो, माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पे आपके पास जितने भी कैपिटल है उतने कैपिटल से आप स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट विद एज लो कैपिटल एज 9,000। फॉर एन एग्जांपल, दिस इज अ नेचुरल गैस चार्ट। 1 point of profit or loss in NG is going to give you 1250 rupees of the profit, and the margin requirement is a 50,000 to 525 rupees. But if you are trading in the mini contracts, the margin requirement are very, very low. 1 point of profit or loss will be 250 rupees, and you can trade with as low capital as a 10,000, 8,000, 9,000. So here the margin requirement are very, very low. सिल्वर माइक्रो में भी आप 10 से 11,000 में आपकी पोजीशन ले सकते हो। इन ऑल द कमोडिटीज वी आर हैविंग द मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स। जिंक एक पॉइंट ऊपर नीचे जाता है जिंक में तो आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट मिलता है। The profit potential over here are too good. 1 point of profit or loss is going to give you 5,000 rupees of the profit in all the base metals, and the margin requirement will be around 1 lakh, 1,50,000. See, by if you're not having that capital, then even you can trade with a low capital, like in the zinc mini contract, where the margin requirement are very low, like a 29,000, 30,000, or 8 point का profit or loss is going to 1 point of profit or loss is going to give you 1,000 rupees. Are you all understanding this pointers? Come on, I need a quick replies from all of you. So here the margin requirement are very very low and the profit potential is too good. Crude oil mega contract में अगर trade कर रहे हो तो 2 लाख जितने पैसे लगते हैं. But yes, if you want to go with the mini contract, you can go with just 27,000 and can easily multiply your capital by just focusing on the single commodity. एक ही commodity में ध्यान रख के अच्छा खासा पैसा बना सकते हो. You can start with as low capital as 9,000, 10,000 and can easily multiply your capital. You are having the multiple options in commodities. मेगा कॉन्ट्रैक्ट्स है, मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स है और उसके ऊपर ऑप्शंस भी है. Kamal sir, this all things are very very important. I'm explaining you from basic. Okay, Kamal sir. See, I know we want to learn the strategy. सभी को strategy सीखनी है, सभी को पैसा बनाना है. What do you all say? How many of you want consistent income from the market on a daily basis? But तो पैसा तो बनाएंगे हम लोग और स्ट्रेटेजी भी मैं सिखाऊंगी, पर उसके पहले जो भी मैं सिखा रही हूँ, वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग टू पीपल, एवरी ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So don't take these things for granted, and it is definitely from basic. The people those who are new to trading, they can always start with the commodities. Okay, they can always start with the commodities, because in commodities we don't need to focus on the multiple scripts. One commodity is enough to achieve to get your target, and your focus doesn't get diverted. So any beginner can start with it, and the technicals work like a magic over here. या तो मैंने वही क्वेश्चन पूछा था कि आप में से कितने लोग वो ट्रेडर कैटेगरी के हो, मतलब कितने लोगों को कंसिस्टेंटली पैसा निकालना है मार्केट में से. And how many of you are an investor? See, there is always a two category of the participants, right? One is a trader and another one is a investor. Yes, you can be a trader as well as investor. Trading करके जो पैसे बना रहे हो वो आप investment भी कर सकते हो. And yeah, that is true. There are multiple traders over here. So for a trader, if the money or the amount or the target is coming from the Nifty, Bank Nifty or a commodity, it doesn't make any difference, right? And commodity is the best segment for any trader. You can easily multiply your capital over here. You can start with a very low capital and the probability of the success is too high over here. Let me explain these things in detail. मैं ये सभी चीजें आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगी. And yes, I'm also a trader as well as an investor. After trading, you can always go for the investment. Yeah, Rishabh sir. So it is a very good segment for both. So I'll be showing you, I'll be explaining you that. First of all, once again, I have already explained many pointers over here, but फिर से एक बार देख लेते हैं. Okay, that's great. I'm coming to everyone question. कितने पैसे लगते हैं ट्रेडिंग करने में इन कमोडिटी में? डीजे सर, लास्ट 10-15 मिनट तो मैं वही समझा रही थी कि कितने पैसे लगते थे. तभी कहाँ पे थे सर आप? कितने पैसे लगते हैं कमोडिटी में ट्रेडिंग करने के लिए? कम ऑन, एनीवन कैन आंसर दिस.
You can start with as low capital as a 8,000, 10,000. Come on, I want you all to be an attentive in the session. वही चीज repeat करूंगी तो उसमें थोड़ी मजा आएगा सर. So you need to be attentive in the session. Yes, that's perfect. I'm already getting wonderful replies from the members. That's great. I know it is afternoon, but still I want you people to be active. Okay. See now, why commodities? The leverage over here is too good. यहाँ पे कोई leverage, the brokers are not giving us leverage, but this leverage is given by SEBI itself. SEBI itself has a came up with the mini contracts in the commodities. SEBI itself has a came up. All of you listen carefully and try to understand. SEBI itself want a common people to participate in commodity market and can easily multiply your capital. मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग न्यूज़ रीड कर रहे हो, but if you will be reading the news, you will be understanding that there are many in the economic times and many newspaper, you will understand that the people are turning towards the commodities nowadays because the leverage given by the SEBI for the future and options in the commodity is too good than in equity. It is very attractive. Margin requirement are very low. SEBI itself has came up with the mini contracts and the options in commodities where you can start your trading journey with as low capital as a 10,000. यहाँ पे कोई भी एक दो बंदे मिलके ये तो प्रोप्राइटर ऑफ द कंपनी और नथिंग लाइक दैट sort of manipulation is possible. Manipulation over here is almost near to nil. इसीलिए टेक्निकल्स यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है. Now the third point is a portfolio diversification. Now all of you answer my one question. Why as an Indians, हम सभी लोग Indians हैं, right? And as an Indians, why we all are so much keen on investing in gold? Come on, can I get a quick replies? क्यों सभी लोगों को गोल्ड में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है? Why we all are so much keen in investing in gold and silver? Let me show you all. Okay, I'm getting beautiful replies from the members. Diversification, perfect, secured, price increases. मतलब कि यहाँ पे इतना तो पता ही है सभी को कि इक्विटी मार्केट बराबर चला या नहीं चला, पर गोल्ड तो अच्छा खासा रिटर्न तो दे ही देगा. Am I right? If you are investing 7 to 8 lakhs in equity, at least one or 2 lakhs you will be investing in the gold. What do you all say? Because you know that it diversifies your portfolio. It is a natural diversification to your portfolio. It is a natural hedge. मतलब आपको उसके लिए कोई efforts नहीं देने. अगर कोई भी market बराबर नहीं चल रहा है तो automatically precious metal आगे बढ़ जाएंगे. And they will start working hard because people will start investing in that. So yes, gold is also a commodity and it is a natural diversification as well as a natural hedge to your portfolio. मतलब कि जब भी आप कमोडिटीज में ध्यान रख रहे हो तो आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहे हो और इट इज अ नेचुरल हैक. Second thing, see by here the crude oil is open in front of you all. Can you all see the chart of the crude oil? Come on, when the prices of the crude oil is decreasing, जब भी crude oil का प्राइस नीचे जा रहा है, then it is a positive for the Asian Paints, Pidilite, MRF, etc. because it is used as a raw material in paints. How many of you know that? So whenever you are trading in the crude oil, जब भी आप crude oil में ट्रेड कर रहे हो और जब भी crude oil की प्राइसेस नीचे जा रही है तो आप बाकी सब businesses में फायदा उठा सकते हो. They are inversely proportionate to all these businesses. In the similar way, zinc is a leading indicator for a Hindustan Zinc Limited. In the similar way, aluminium is a leading indicator for the Hindalco, Nalco, yeah, perfect. Steel is a leading indicator for a Tata Steel. तो ये सभी commodities है ना, they are the leading indicators for the majority of the businesses. मतलब कि अगर आप commodity में trade कर रहे हो तो साथ साथ में उसके related businesses में भी फायदा उठा सकते हो. It is a natural hedge as well as it helps in diversifying your portfolio. Are you all understanding? You can be a multi-asset trader. अगर थोड़ी बहुत knowledge है ना, then you can be ahead of many. What do you all say?
Now next is the flexi timings. Now this is very important. All of you can note down the important timings if you all want. Say by whenever you are trading in this commodities, commodity market starts early in the morning 9 a.m. सुबह 9 बजे ये मार्केट चालू होता है और रात को 11:30 बजे तक चालू रहता है. अभी कौन से टाइम पे आप अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ सकते हो एंड विच टाइमिंग्स आर गुड टू मिंट मनी इन कमोडिटीज. सो यू कैन नोट डाउन द टाइमिंग्स. सुबह 9 बजे इन द मॉर्निंग 9 a.m. इंडियन मार्केट ओपन्स. 11:30 a.m. टू 1:30 p.m. 11:30 से 1:30 बजे तक यूरोपियन मार्केट ओपन होता है. So whenever the European market opens, at that time you will be getting amazing momentum in all these commodities. In the afternoon 2:30 p.m. to 4:30 p.m. 2:30 से 4:30 बजे तक लंदन मार्केट ओपन होता है and the major moves in the base metals you will be getting at that point of time. In the evening 6:30 p.m. to 7:30 p.m. US market opens. So major volumes are created in the evening time and you can also trade at 8 p.m. You can also trade at 9 p.m. You can easily multiply your capital by just focusing on the single commodity. 10 बजे के बाद भी आप ट्रेड करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो. So are you all understanding the importance of the flexi timings in the commodities? Come on. Can I get a quick replies from all of you? Yeah, the next is the technicals work like a magic over here. इसके charts जब भी आप देखोगे ना, I'll be showing you people right now. The technicals are really giving amazing results in commodities. Technical यहाँ पे बहुत अच्छा result देता है. The patterns, the price actions are very clear. Volumes are too good. We are getting the global volumes over here. यहाँ ये commodities खाली इंडिया में नहीं ट्रेड होती है, पूरी दुनिया में ट्रेड होती है. So we need to consider global volumes. We get amazing momentum and the technicals work like a magic over here. Now अभी ये सब तो पता चल गया कि okay, and many of you would be beginners. There are many intermediate traders also over here in today's webinar. I can see that. Now all of you listen carefully. तब आशीष कुमार सर, there is a big replies or the questions from your side. I'll be reading. Hold on sir. Now अगर आपको start करना है commodity में as a beginner, you can start with a single commodity. You don't even need to focus on the multiple commodity. Liquidity is too good, Satyanarayan sir. Okay, don't worry. You can start with a single commodity. Now, which commodity to be start with? Say, by how many of you are fond of trading Nifty, Bank Nifty? It is good for swing trading. It is good for positional trading. It is very good for intraday trading also. Aradhya Upadhyay sir. Okay. How many of you are trading in Nifty and Bank Nifty? How many of you are fond of trading in Nifty, Bank Nifty? तो अगर आपको वॉलेटाइल मूव्स चाहिए, अगर आपको क्विक मोमेंटम चाहिए, जल्दी जल्दी मोमेंटम चाहिए, जल्दी पैसा बनाना है, मतलब इफ यू आर गोइंग टू पिक अप such a strong and the quick moves, then you can start with a gold and silver, gold or silver, because you will be getting almost similar momentum like a gold like a Nifty and Bank Nifty in the gold or silver. इफ यू वांट द एक्टिव मोमेंटम, अगर आपको अच्छा खासा एक्टिव मोमेंटम पकड़ना है, बहुत ज्यादा क्विक भी नहीं और बहुत स्लो भी नहीं, then you can go with the crude oil and natural gas. It is going to give you amazing momentum. And if you want to go with the peaceful moves, सुबह पोजीशन लिया, रात को बुक करेंगे, आराम से ट्रेड करना है, then you can go with the zinc, copper, base metals, where you can peacefully trade and can make a good amount of money. Is that clear which commodity to be selected? Come on. Yes, now I'm just soon rushing towards the strategy. Strategy पे मैं जा रही हूँ. I'll be coming to everyone's question also. But hold on for a few minutes. Let us discuss few myths about commodity trading. ज्यादातर जब भी commodity की बात होती है ना, तभी ज्यादातर मुझे questions आते हैं कि is it only for the big industrialists, importers and exporters? Only वही बड़े लोग ही पैसा कमा सकते हैं. Those who are importers, exporters, etc. No, not at all. Listen, when you can plan your position with as low capital as a 10,000, आप 10,000 या 15,000 में अपनी पोजीशन ले सकते हो. दैट मीन्स एनी कॉमन पीपल कैन पार्टिसिपेट ओवर हियर एंड कैन इजीली मल्टीप्लाई योर कैपिटल ओवर हियर. द बेसिक प्रॉब्लम इज दैट मेनी मेंबर्स आर नॉट अवेयर अबाउट द सेगमेंट. काफी लोगों को इसका फायदा ही नहीं पता है, इसीलिए ये प्रॉब्लम होती है.
but yes, it is definitely for any common people. Too much of volatility. Now people come and tell me, अरे एक आध घंटे में, एक घंटे में या 2 घंटे में, when it is giving 100 200 points of momentum, or see by this is a natural gas chart, within 1 hour when we are getting 20 points of the fall, or almost 10 points of fall in the few hours, then people tell me that why it is so and what a quick momentum. See, अगर ऐसे प्राइस नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा तभी तो पैसा बना पाएंगे. Are you all understanding? As a trader, what all things we need to make a consistent income? अगर as a trader अगर consistent income बनानी है तो क्या क्या चीजें चाहिए हम लोगों को? We need a good volumes, अच्छा खासा वॉल्यूम चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, मोमेंटम चाहिए, टेक्निकल्स अच्छा चलना चाहिए. Am I right? Technical should work good, momentum should be good, liquidity should be good, and फ्लेक्सी टाइमिंग्स. तो यहाँ पे सभी चीजें आप लोगों को मिल रही है. सुबह 9 बजे से लेके रात को 11:30 बजे तक आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो. मोमेंटम इज टू गुड. So this volatility is not a negative point, but it is a positive point. It is a positive. You just need to learn mint the volatility in commodities. It can be your best friend, and that is the reason why you can easily multiply your capital. Are you all understanding what I'm trying to explain you? Yes, Sneha ma'am, we are going to learn the strategy based on the technical analysis and the price action. पर ये चीजें जो भी बता रही हूँ ना वो भी इग्नोर मत करना. I'm soon rushing towards the strategy. Come on. Yeah. So next is compulsory deliveries. Now this is giving a nightmares to many. Whenever we people think about the compulsory deliveries. See, people come and tell me that, okay, do we need to take any compulsory deliveries when we are trading in commodities? So, no. First of all, you don't need to take any compulsory deliveries. एक टेंडर पीरियड रहता है कमोडिटीज में जहां पे आपको अपनी पोजीशन क्लोज करनी है. टेंडर पीरियड कम्स ड्यूरिंग एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले वो टेंडर पीरियड रहता है. यू शुड क्लोज योर पोजीशन बिफोर द टेंडर पीरियड और ड्यूरिंग द टेंडर पीरियड. ऑल द ब्रोकर्स, कोई भी ब्रोकर आप पकड़ लो, मतलब whatever broker you are using, or in whatever wherever you are trading, all the brokers will be giving you or will be updating you about the tender period, and they will not allow you to take position during tender period. If your position is open during tender period, then only you need to think about the compulsory deliveries. So please don't worry about any compulsory deliveries. Commodity trading is 110% लीगल. ये एकदम लीगल है और सभी ब्रोकर में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो. You can even do long term trading. You can even do intraday trading. You can also do swing trading in commodities. And in commodities, we don't have a cash segment. We are just having the futures and the options in commodities, and it gives amazing result on a daily basis. Okay. Now people come and tell me that not enough time to focus over here, already busy. Are the members, those who are a full-time trader or those who are already trading in equity, they can even focus in commodity market after 3 p.m. Those who are working professionals, you can trade even after 8 p.m., 9 p.m., 10 p.m. at the night, and can easily multiply your capital. Here your focus doesn't get diverted. For an example, this is a natural gas chart. यहाँ पे मैंने NG का chart open किया है. Natural gas, just look at this chart. If you are observing this chart on a regular basis, अगर यही chart आप हर रोज देख रहे हो, इसी के ऊपर आप हर रोज काम कर रहे हो, and every day you are looking at the same chart, every day you are multiplying your capital on the basis of the same chart, you are applying the technicals on the same chart, within 3 to 4 months you will be able to pick the perfect vein of this particular commodity. Am I right? उसकी बराबर से नस पकड़ सकते हो आप लोग 2 या 3 महीने में. What do you all say? By observing it on a regular basis, on a daily basis, your focus is just on the single commodity. It is easy to multiply your capital. It is not difficult, but it is easy to mint money in commodities. एंड देर आर मेनी बिग टाइम ट्रेडर्स. अगर आप गूगल करोगे ना तभी पता चल जाएगा आप लोगों को कि बड़े बड़े ट्रेडर्स ने कमोडिटी से स्टार्ट किया है. दे हैव मल्टीप्लाइड देयर कैपिटल इन कमोडिटीज एंड डेफिनेटली दे हैव गॉन फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. So even every one of you can do this.
आई एम ऑलरेडी गेटिंग अमेजिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द मेंबर्स, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं. आई एम कमिंग टू एवरीवनस क्वेश्चन. प्लीज होल्ड ऑन, जस्ट गिव मी 2 to 3 minutes more, and then we'll be switching to the questions and we'll be running towards the strategy. Okay, now we all know about this myths about commodity trading. Now let us understand. Teach us technicals, please. Just give me 2 minutes, sir. We are soon rushing towards the technicals and the strategies. Okay. See, commodity exchange is an exchange where various commodities is traded. Overall, पूरी दुनिया में बहुत सारे commodity exchange है. Coming to the Indian scenario, we are having the finance ministry. We do have a CB below that, and we also have an MCX. MCX is more focused on the non-agri commodities or the globally traded commodities. NCDX exchange है जहाँ पे agri commodities ज्यादातर trade होती है. If you are interested to trade agri commodities, then you will have to focus on the NCDX. And ICX is also an exchange where you can easily multiply your capital like a diamond and steel. NSE and BSE also want a pie from the commodities. They also started too low. So our major focus is on the MCX and the non-agri commodities. Okay. Now coming to the correlation between commodities, अरे commodities की बात मतलब ये खत्म ही नहीं होगी. उस commodity में trade करने के फायदे ही बहुत ज्यादा है. For an example, here you people can see that I'll be showing you if you are trading in the gold. Okay, if you are trading in a gold commodity or if you are trading in the silver, you can always take an advantage in the another commodity. You can take an advantage of the multiple commodities. Say by this is a gold and silver comparison. I'm showing you people the live comparison between the gold and silver. Here I'll be just, you people can see this. Yeah, just a minute. Okay, now you all can see over here, whenever you are planning your position in the gold, you can also take an advantage of the silver. मतलब कि एक commodity में trade कर रहे हो तो दूसरी commodity में भी फायदा उठा सकते हो. It is, you can take an advantage of it. Are you all understanding this? Yeah, it is always. Along with that, I have got the multiple questions, and today we are going to focus on the price action based strategy. Commodities और technicals की बात करें तो यहाँ पे technical बहुत ही अच्छा result देता है, and the price action based strategy which is giving more than 80% of accuracy. The strategy whatever I am going to teach you people today, आज जो भी strategy हम लोग सीखने वाले हैं वो खाली intraday के लिए नहीं है. It gives amazing result for intraday as well as for your positional trading. And yeah, let us understand the strategy. um, yes, Arup sir, definitely we are going to do everything in detail. इसके अलावा अगर मेरी बात करें, and if you people are asking me about me, and before starting the strategy, see this is one of the account which I have opened right now. एक account मैंने अभी यहाँ पे open किया है. Let me show you people. I am also fond of trading, और trading करके मैं investment करती हूँ. And here you people can see the one of the account which is open right now in front of you all. Along with that, I'll be showing you the portfolio as well. So basically, sorry, yeah, just a minute. Yes. um yeah, why not, sir? I'm coming and I am answering to all your questions, so please just hold on for that. Okay. Yeah. Just a minute, just a minute. I'll be showing you. Let it get loaded. I'll be showing you that also. So, and along with that, I'll be sharing my screen once again over here. Here you people can see this is the Phoenix Commodities public channel. I'm a co-founder and the chief mentor at the Phoenix Commodities. Why not, sir? I'll be showing you everything. Don't worry for that part. And can you all see the screen? Can you all see the Telegram channel which I've shared right now? It is in front of you all, or shall I share again? So yes, this is the Phoenix Commodities public channel, which here you people can see. Okay. I'll share it once again. See, yeah, just a minute. जब भी सभी लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं ना कमोडिटीज में तो ऐसे ही करते हैं. They start with very
Yeah, this is equity and is it fine now? Can you all see now? First of all, come on. Can you all see the Telegram channel or yet not visible? Okay, great. So now you people can see it, correct? See, this is the Phoenix Commodities public channel. I'm a co-founder and chief mentor over here. It is a completely training institute where we share the live trade levels, where we learn and earn together. It is a collaborative learning platform. You people can be part of it. It is just 100% public channel where we try to share all the live levels for all the commodities and the reason behind taking our trades. Along with that, जब भी सभी कोई चालू करता है ना कमोडिटी ट्रेडिंग, तो यही क्वेश्चन आता है कि मैम ये अच्छा चलता है कि नहीं, क्या हम लोग इसमें ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, क्या यहाँ पे हम लोग पैसा बना सकते हैं। सी, इसका पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है। व्हेनेवर दे स्टार्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। जब भी स्टार्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि चलो थोड़ा बहुत साइड इनकम बना लेंगे। दे ऑलवेज स्टार्ट विद दैट, बट दे नेवर रियलाइज व्हेन दे आर सरप्राइजिंग दैट प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। वो लोग जब भी स्टार्ट करते हैं ना, तभी कम से स्टार्ट करते थे, एंड सी हाउ पीपल आर मेकिंग huge profits on a regular basis, and on a daily basis they come and tell me that ma'am, still we want to learn, still we want to experiment, that options gives amazing result in commodities। कमोडिटी में ऑप्शन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। हियर वी डोंट हैव दैट लेवल ऑफ द टाइम डीके एंड द प्रीमियम डीके। फ्यूचर और ऑप्शन में काम होता है, और द वन commodity is enough to achieve all your target। Here you people can see all these are working professionals। ये सभी लोग working professionals हैं। I'm just showing you one of the group right now। The batch 34 is going to start, so it is already 33 batches are done। people are doing wonderful job, और ये सभी लोग working professionals हैं। रात को 8 बजे के बाद ट्रेड करते हैं तो भी अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं, और रात को मीन्स दे आर क्लोजिंग दैट डे in lakhs। there are many those are closing that days in thousands as per that risk appetite, 80 90,000 1 lakh और उसके ऊपर भी। so the potential of trading in commodities is just unlimited। एक दो एग्जांपल हो तो मैं बोलूं, बहुत ज्यादा ही एग्जांपल है। और इसके अलावा इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस, अगर इसके बारे में और कुछ ज्यादा जानना है, देन दिस इज द फिनिक्स कमोडिटी टेस्टिमोनियल चैनल। ये हमारी टेस्टिमोनियल चैनल है, और यहाँ पे 6-7 साल के लास्ट 6 to 7 years every day's excel sheet or the trade has been posted over here। you can go, all these are intraday trades, it is 100% live and transparent। you can go through this, you can browse it। आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे देखो कितने स्टॉप लॉस हिट हुए और कितने टारगेट हिट हुए। ये सभी इंट्राडे ट्रेड्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ ट्रेडिंग इन कमोडिटीज, एंड द या ऑप्शन के भी लेवल्स यहाँ पे पुटअप किए गए हैं, सॉरी, ऑप्शंस के भी लेवल्स यहाँ पे पुटअप किए गए हैं, एंड द इन्वेस्टमेंट इज आल्सो पुटअप ओवर हियर। सो प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट, यू कैन चेक दैट आल्सो। थोड़ा टाइम निकाल के ये सब देखो, तभी आपको पता चलेगा कि इसका पोटेंशियल कितना है। और जब भी पोटेंशियल समझ में आएगा तभी तो इसका फायदा उठा पाओगे गौरव सर। Yeah, so now let me come to the strategy without any delay। Let us not waste the time for the same। What do you all say? Here I'm again coming to the strategy, and let us start with the strategy। I'll be showing you other stuff as well after a while। Let us go to the strategy। Should we trade in the futures or options? You can select Satyanarayan sir. It is giving a very good opportunity in the future as well as in option, and you can decide anything, whatever you want, sir. So you don't need to worry for that part. Okay, now can you all see this is the crude oil chart which I have opened right now in front of you all? Let us start with the strategy. Once again, let me explain you all. Shall I move towards the strategy? Shall I take the questions or the questionnaires after first part of the strategy? बहुत सारे questions हैं, मैं सभी questions को थोड़ी देर के बाद, yeah, after finishing the first part of the strategy, I'll be coming to the questionnaires। That would be good। What do you all say? Yes, the strategy, whatever I'm going to teach you people today, it is based on the price action। Yeah, it is based on the price action। It works amazingly well for the intraday as well as just a minute, you people cannot see my screen। Okay, okay, just a minute, give me 1 minute। Can you all see the screen? Okay, can you all see the charts? Zero the.
Oh, okay. It is showing the Telegram channel. Okay, okay, okay. Wait a while. Just okay, okay. Telegram channel is that? Just a minute, just a minute. See the Telegram link. I think Goodsage can share you so that it would be easy for you all to get it. Yeah. Okay, okay. I'm sharing it once again. Don't worry. Just a minute. Just a minute. If still you can't see that, just give me a 1 minute. Yeah, yeah. I'm sharing it once again. Yeah. Now, can you all see? Yes, I was just showing you people that yes, I started with very low and have reached over that. But instead of that, first of all, I'll have to. Can you all see now Zerodha chart? Zerodha chart is clear. Hmm, okay. I think it is taking time to load. Hold on, hold on. You will get it. You will get it. So let us begin with the strategy. Now, I think it is clearly 100% clear to everyone because multiple screens were open. So maybe because of that, we were facing that issue or it was taking time to load. That's it. So now let us focus on the strategy. खाली strategy पे ध्यान रख रहे हैं. Gaurav sir and all the members, those who want to learn the technicals, I want just 100% attention over here. एक ही questions please बार बार मत पूछना. यहाँ पे बराबर से ध्यान रखना and don't divert yourself anywhere else. I want 100% focus over here. This is the Zerodha which I have opened and I have just opened the crude oil chart. पूरी strategy को मैंने तीन phase में divide किया है. I have just divided the complete strategy into three phases. This is the daily chart. इंट्राडे में भी ट्रेडिंग करना है तो भी आप लोगों को मंथली चार्ट से स्टार्ट करना है. ओके, just focus on the monthly chart, just convert it into the monthly chart. Now this is the monthly chart of the crude oil and this is a Zerodha chart. It is a continuous chart, sir, and here you people can see this is the monthly chart. Now I'm just trying to draw the support and resistance zone. पहले जहां पे भी price रुका है, wherever the price had stopped previously, it is going to act as a very good support zone. So this line, it is a monthly chart. Is it a good support zone in the crude oil? Come on, tell me. And whenever I'm connecting all this top, ये सभी top को जो मैं जब भी मैं connect करती हूँ, I'm getting the resistance zone. Can you all see that it is a good resistance zone? It is a good support zone and this is a good resistance zone. Am I right? Yes. Now this is the monthly chart. Just see how beautifully the support and resistance zone are respected. Now I'm just switching this monthly chart to weekly chart. Okay. Now, can you all see that in the weekly chart also it is respected very nicely? Can you also see that in the weekly chart also the same lines are respected very nicely? See, I am teaching you the stuff which you are not going to get easily anywhere. We are going to understand how to use the benefit of the multiple time frame in your commodity trading to get maximum hit ratio, to get maximum success ratio or the hit ratio, and the probability of this success will be too high when you will be using the multiple time frame for achieving your entry exits. So here you people can see this is the weekly chart. Weekly chart में भी ये lines बहुत ही अच्छे से respect हो रही है. I am explaining you people Vikram sir intraday as well as the positional strategy. ओके, इंट्राडे और पोजिशनल. अगर इंट्राडे में भी ट्रेड करना है तो भी आपको मंथली चार्ट से ही स्टार्ट करना है और ये वीकली चार्ट है. नाउ आई एम जस्ट स्विचिंग इट टू द डेली चार्ट. कम ऑन, जस्ट सी दिस. Is this lines respected nicely in the daily chart?
दिस इज द डेली चार्ट, इट इज द सपोर्ट ऑफ द मंथली चार्ट। मैंने खाली मंथली चार्ट में लाइंस बनाई है, बाकी मैं बिल्कुल ही कुछ भी चेंजेस नहीं किए। एंड जस्ट सी हाउ ब्यूटिफुली इट इज रिस्पेक्टेड इन द डेली चार्ट। As per the daily chart, I can draw one more resistance zone over here because this was the high every time. If I connect all this high together, then I'm getting this a dynamic resistance zone, correct? And now I'm just switching it to the hourly chart. Now this is the hourly chart of the crude oil. Just see, अभी के मार्केट के हिसाब से दिखा रही हूँ, is this lines are respected nicely in the hourly chart? Vikram sir, don't go below 1 hour chart for your intraday trades also. अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग करना है तो भी 1 घंटे से नीचे नहीं जाना है। Just try to focus on the higher time frame. Higher the time frame, higher would be accuracy. For your intraday trading also, don't go below hourly chart. Whenever you are drawing the support and resistance zone, NK sir, you need to try to connect maximum tops and bottom. वो support या body भी हो सकता है या shadow भी हो सकता है, पर maximum support और resistance zone cover होने चाहिए। मतलब whenever you are drawing this line, the price has stopped over here, price has almost stopped over here, so you need to connect the line where the maximum data points are connected. It can be shadow or it can be body. As per the hourly chart, here you people can see that as per the current market scenario, this is the resistance zone. Am I right? क्योंकि पहले यहाँ पे प्राइस रुका था, फिर यहाँ पे भी रुका था, एंड अभी यहाँ पे भी रुका है. So it can be shadow or it can be body, but the majority of the data points should be connected to that. Are you all understanding the first phase of strategy? So as per the first phase of strategy, we need to be ready with the support and resistance zone of the higher time frame. Higher time frame, that means you can start with the monthly chart, you can switch it to the weekly chart, be ready with the levels, and then go ahead. This is the MCX exchange and this is the Zerodha which I have opened right now, NK sir, in front of you all. Now, all of you listen carefully. Shall I take one more example for the first phase of strategy? ये first phase समझने के लिए एक और example ले लो. Okay, this was a crude oil chart. अभी NG को देख लेते हैं. This is the natural gas chart now in front of you all. I'm just taking randomly any script. If you want any other script, we'll be focusing on that also. Now this is the NG chart in front of you all, and here also I'm just going to the continuous chart. This is the first phase of strategy. It is a continuous chart, and let us start with the monthly chart. See now, this is the monthly chart. Gold भी लेंगे. James sir will be checking, will be taking the gold also. Don't worry. Technicals are working amazingly well in all these commodities. अभी natural gas start कर दिया है तो पहले NG खत्म करते हैं, फिर gold पे भी जाएंगे. Okay. See, is it a good support zone? Just see the beauty of this chart. Come on. अगर 2 महीने पहले यहाँ पे किसी ने buy किया होता, हर बार monthly chart, the support is respected very nicely. What do you all say? पहले प्राइस यहाँ पे रुका था, थोड़े महीनों के पहले भी यहाँ पे रुका था, and then within 3 to 4 months the price has again stopped over here and has given the wonderful returns. What do you all say? Come on. It is a very strong support zone or a demand zone. It has given a beautiful result. It is a support zone of the monthly chart. और सभी टॉप को अगर मैं कनेक्ट करती हूँ, then I am getting the resistance zone, the dynamic resistance zone. I am just connecting all these tops together. And here you people can see the resistance zone. Is it a good resistance zone as per the monthly chart? Along with that, wherever the price had stopped previously, इसको connect करके मैं एक line बना सकती हूँ, and this will be the resistance zone. Now I am just converting this monthly chart to the weekly chart. Are these lines respected nicely in the weekly chart? Weekly chart में ये सभी lines बराबर से respect हुई है. Come on. Yeah, we'll be checking the zinc, copper and all the commodities. Don't worry for that. अभी जो समझा रही हूँ, please उस पे ध्यान रखें.
आगे का बाद में देखेंगे. ओके, these lines are respected very nicely, then switching it to the daily time frame, and here you people can see the same levels, the same lines are respected very nicely in the daily chart also. This is the natural gas chart, and here I'm just trying to zoom this. As per the daily chart, I'll be ready with the other support and resistance zone if it is possible. और यहाँ पे मुझे clearly दिख रहा है that the price is moving within the range. This was a support zone, and the price is acting as a very good support zone over here, as well as this is a very good resistance zone. Made right? Correct? Yeah, now just switching it to the hourly chart, and the lines are respected very nicely in the hourly chart also. I'll be just zooming this and just see how beautifully the lines which are drawn in the daily chart, in the hourly chart, are giving amazing results in the higher time frame as well as in the shorter time frame. And अभी का current example देखते हैं. It's a beautiful, it has respected the resistance zone of the daily chart. What do you all say? Is it so difficult to do this? Is it so difficult to do this? Are you all understanding? Yeah, just a minute. I'm not getting the replies. I'll be just increasing the size. It is quite easy. So ये एनजी का ही चार्ट है जो हमने बाद में देखा. Now after the first phase of strategy, let me explain you people the second phase of strategy. As per the second phase of strategy, you will have to identify the candlestick pattern at those resistance zone. You will have to check the price action on those resistance zone. For an example, if the prior trend is a good uptrend, पहले का ट्रेंड अच्छा खासा ऊपर का है, प्राइस इज गोइंग अपवर्ड एज द प्रीवियस ट्रेंड इज गोइंग अ वेरी गुड अपवर्ड. And this is the resistance zone. Yes, Somal, Matthews, sir, I'm coming to your question. Hold on, sir. I'm coming to everyone's question. Please, no questions right now. I can't read the complete question, right? See, again, as per the previous trend, price is going upward, price is again going upward, but sellers are becoming active at the resistance zone and they are pushing price downward side, and we are getting somewhat like a shooting star candlestick pattern जहाँ पे upper shadow should be twice or thrice to the size of the body, and the lower shadow will be almost near to the bottom. या हिंदी में बात करें तो पहले का ट्रेंड अच्छा खासा ऊपर का है और फिर से प्राइस रेजिस्टेंस जोन पे ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, बट द सेलर्स आर बिकमिंग एक्टिव. सेलर्स प्राइस को आगे नहीं जाने देते, बायर्स को आगे नहीं जाने देते. दे पुश प्राइस डाउनवर्ड साइड, एंड वी आर गेटिंग द शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जहां पे ऊपर का शेडो 2 या 3 गुना बड़ा होगा बॉडी से, एंड द स्मॉल बॉडी और नीचे का शेडो ऑलमोस्ट नियर टू बी lit. And the second या द सेकेंड कैंडल, दूसरे ही कैंडल में आप लोग सेल कर सकते हो इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के. Let me explain you in detail, or let us take the live example. This is called as a shooting star. अभी ये एनजी का चार्ट ओपन है. We have drawn these lines in the daily chart. ये लेवल्स जो हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम में बनाए हैं, and this is the Friday's chart. Can you all see the beautiful shooting star at the resistance zone of the daily time frame? Come on, just see this beautiful example. Is the prior trend a good uptrend? पहले का ट्रेंड अच्छा खासा ऊपर का है और रेजिस्टेंस जोन पे हम लोगों को अच्छा खासा शूटिंग स्टार मिल रहा है. And yes, you can use any reversal candlestick pattern. I am explaining you people one of the reversal candlestick pattern, that is a shooting star at the resistance zone. Arup sir, okay. इसके साथ साथ हम लोगों को वॉल्यूम ऐड करना है because volume plays a major role. And along with this volumes, can you all see that, and as per the shooting star the sellers volumes are increasing. नीचे के अंडरले वॉल्यूम्स को चेक करो तो शूटिंग स्टार के साथ साथ सेलर्स के वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं. कैन यू ऑल सी दिस? Along with that, I will be just adding the stochastic RSI to this. I'll be just adding stochastic RSI. Now, stochastic RSI is a leading indicator.
ये स्टोकेस्टिक आरएसआई एक लीडिंग इंडिकेटर है, वो कैंडलस्टिक पैटर्न प्राइस एक्शन के साथ साथ ही क्रॉसओवर देता है। इट इज अ बैंडेड ऑसिलेटर व्हिच रेंजेस फ्रॉम 0 to 100. It is a combination of the stochastic and RSI. 80 to 100 is a overbought zone, 0 to 20 is a oversold zone. Along with the shooting star, we are also getting the crossover over here itself. हम लोगों को crossover यहीं पे मिल जाता है। And the price, the beauty of दिस इज दैट कि प्राइस मजे से ऊपर जा रहा था, जैसे कि यहाँ पे हाई बना था, दूसरे दिन फ्राइडे को यहाँ पे हाई बना, प्राइस इज मेकिंग ऑलमोस्ट सेम हाई यू और अ हायर हाई, प्राइस तो ऊपर जा रहा है पर ऑसिलेटर स्टोकेस्टिक आरएसआई है जो मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर है, जो स्पीड पकड़ता है बायर्स और सेलर्स की, वो दिखा रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है बट द मोमेंटम इज डिक्रीजिंग। जो स्पीड से प्राइस ऊपर जा रहा था ना, वो स्पीड से प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। ऑसिलेटर द स्पीड इज डिक्रीजिंग एंड इट इज मेकिंग लोअर हाई, द मोमेंटम इज नॉट टू गुड, इट इज गिविंग यू एन अर्ली इंडिकेशन ऑफ द ट्रेंड रिवर्सल। So along with the shooting star, before that itself we got the crossover, we got a very good divergence. We can go for the sell entry by keeping the high, this previous candle high, as a stop loss. So we are getting the divergence, that is something like a cherry on the cake. At the resistance zone, ये resistance zone कौन सा है? डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस जोन है। ऑन द रेजिस्टेंस जोन, ऑन द रेजिस्टेंस जोन ऑफ द डेली टाइम फ्रेम, we got the shooting star candlestick pattern. Along with that, we got the crossover. Along with that, we also got the divergence. Can I go for a sell entry over here by keeping this candle high as a stop loss? Yes, I can. And the stop loss here, the entry is almost nearby 201. The stop loss is 203, and within a 3 hours, it has made a low of, it has made a low of 193. It has given a almost 8 points of profit, 193 from 201. Isn't it amazing? Come on, can I get a quick replies? Are you all understanding the first part, the strategy for the selling at the resistance zone? Now, all of you answer my one of the question कि चलो यहाँ पे तो 2-3 घंटे में, this has happened just at on the Friday. I have taken the most recent example. मैंने अभी का recent example लिया है. This was just about on this last Friday. Now just answer my one of the question. Forget about 8 points of profit or 5 points of profit. Just answer my one of the question that can you target 1 point of profit at the end of the profit and loss? Within this 14 hours of trading, can you target just 1 point of profit in natural gas at the end of the day after profit and loss? पूरा सीख लेने के बाद 5 मिनट में क्यों जाना है कृष्ण कुमार सर, जब भी आप आराम से 1 घंटे में अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो, अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, then why you want to frustrate yourself? When you can do it easily, why you want to go in the 5-minute time frame and the 10 minutes time frame? It's not required, right? 1 point of profit, that means 1250 rupees of the profit. अगर आप एक महीने में 20 दिन ट्रेडिंग कर रहे हो, खाली एक ही कमोडिटी पे ध्यान रखो, जैसे कि नेचुरल गैस, पूरा सीख लेने के बाद अगर 20 दिन में एक एक पॉइंट का प्रॉफिट निकालते हो आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज द इंट्राडे स्ट्रेटेजी विक्रम सर। ये अवरली चार्ट है, 14 घंटे के लिए मार्केट चालू रहता है। You need a one good trade to get that 1 point of profit. 5 मिनट में निकल जाएगा, पर चलो 5 मिनट बहुत कम है, मैं बताती हूँ कि 1 घंटे का टाइम रखो। If you can spend half an hour or 1 hour in a day and just target a single commodity, at the end of the 20 trading days, how many points it will be? Come on, 20 points, that is 25k. The same strategy, same rule, 1 hour chart, the same script. हर रोज खाली आधे से 1 घंटा निकालो। कैन यू डू द सेम थिंग आफ्टर 3 to 4 months with the 2 lots? अगर वही चीज, वही स्क्रिप्ट, वही 1 घंटा अगर आप 2 लॉट से करोगे तो 1 महीने में कितना पैसा निकाल पाओगे? इट इज अ हाईली अचीवेबल थिंग। You can get the 40k. The same thing, the same strategy, the same commodity, same script और वही आधा घंटा अगर आप 5 लॉट से करोगे, then one day it, on a daily basis, you will be getting 6250 rupees of the profit, and at the end of the month you will be getting 125 points of profit.
Are you all understanding this point? Is it worth giving pain or not? Come on, tell me. Commodity is the best segment to work with. It is the easiest segment to work with, and it is quite easy to multiply your capital. The timings you can decide as per your convenience, BSP sir. One commodity is enough to achieve your target. Am I right? Is it worth giving pain or not? उसके लिए मेहनत करनी चाहिए कि नहीं, सीखना चाहिए कि नहीं? Come on, answer that question. It's worth giving a try or not? Oh, am I shouting? Shyam sir, ऐसा लग रहा है क्या? I think I'm going very much loud because I'm not getting quick replies from all of you. No, why I would shout at you all? Come on. Yes, it is worth giving pain, 100%. Let us have a one quick round of the question. Let us have a one quick round of the question. Stop loss तो समझाया ना आनंद sir? Shall I have one more example? See, this is the stop loss. Stop loss just about the reversal candlestick pattern. The stop loss was just about this, almost like a 202.50. Entry was nearby 201. It is just 1.5 point of stop loss, and we are getting almost 8 point of target. Correct? Yeah, one more example. देखो यहाँ पे crude oil का chart open है. And see, this is shouting is required. दिबाकर सर, उसके लिए मेरा गला मत खराब करो. आप उठ ही जाओ सर. You should not sleep now. It is really interesting session. Correct? Dibakar sir, I can't keep on shouting, otherwise my throat will get bad. Can you show different patterns? Yes, why not? I can show, but we have a limited time, right? See, by here also we are getting the shooting star at the daily chart of the crude oil. It is a level of the daily chart, and see, this is the shooting star where we are getting. Along with that, we will be adding volumes to this. This is a crude oil chart. Along with that, उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे indicator add कर रहे हैं, stochastic RSI. Yes, Gursesh, are you there? After this example, we'll be having a quick round of the questions. Along with the shooting star, we are getting the crossover. Gursesh? Yes, ma'am. Yeah, within 2 minutes we'll have a quick round of the questions. And see, we got a shooting star, we got the crossover. Here in the next candle, we can go for a sell entry by keeping this candle high as a stop loss. इसके ऊपर stop loss लगा के यहाँ पे आप sell कर सकते हो 6426 और within 1 hour it has made the low of 6331. ये hourly chart है और इसने अच्छा खासा profit दिया है, and it is a 6331 that has given 100 points of profit within an hour. Isn't it amazing? या 10,000 रुपीज ऑफ द प्रॉफिट. पर वो सब छोड़ दो, 10,000 20,000 मुझे नहीं चाहिए. आप लोग खाली मुझे इतना बताओ कि 10 पॉइंट का प्रॉफिट निकाल सकते हो कि नहीं क्रूड में. आफ्टर प्रॉपर सेट ऑफ लर्निंग्स, कैन यू टेक आउट 10 पॉइंट्स ऑफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द डे और नॉट? 10 points of profit with the one lot is 1,000 rupees. If you will be doing with the 20 trading days, it is 20,000. Correct? And doing with the same thing with the 10 lots, it will give you 10,000. This is a highly achievable thing in commodities. So yes, it is worth giving pain. Let us have a quick round of the questions, Gursesh, and then we'll be coming to the another part of the strategy for the buying zone. Correct? Yeah. Yes, ma'am. All right, I'll share my screen. Yeah, now Phoenix Commodities has a collaborated. First of all, am I audible? Yes. Okay, fine. So first of all, Phoenix Commodities has a collaborated with the Future University, and we have came up with a special bootcamp course, which is a very exhaustive, and definitely it will give a very good kickstart to your commodity journey. Okay, so we are going to have basics of commodities and technicals. We'll be focusing on the reversal trading strategies based on the price action. ये सभी चीजें live market में सिखाई जाएगी. Everything will be taught in the live market, and the 2 days will be focusing on the reversal strategies. 3 different variants of the reversal trading strategy based on the price action. 3 different variants for the breakout trading strategy based on the price action. सभी कुछ live market में सिखाया जाएगा. Magic of intraday trading with commodities. How you can do the power of compounding with
with commodities, exploring commodity indices, commodity options, कैसे आप commodity indices, commodity options में ट्रेड कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मुझे कि मैम ऑप्शन में कैसे चलता है, एंड इज इट जो स्ट्रेटेजी मैंने सिखाई क्या वो खाली हफ्ते में एक बार आती है? नो, इट इज नॉट लाइक दैट। कम ऑन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कमोडिटी सेगमेंट 14 घंटे से भी ज्यादा चलता है। इट गिव्स अमेजिंग रिजल्ट। I'll be coming to all your questions, and commodity inventories, little bit of fundamental, the news impact, that will be a news impact events, वो भी हम लोग clear करेंगे। And see, or whatever news or events is that everything is globally available. There is nothing like a hidden news. Trading psychology and the mind management, how to read charts, all those things will be focusing during the basics of commodities and the technicals, Ashok sir। साइकोलॉजी मैनेजमेंट एंड माइंड मैनेजमेंट, और उसके अलावा जो भी स्ट्रेटेजीज आप लोगों को सिखाई जाएगी उसके ऊपर, दिस इज व्हाई वी हैव कोलैबोरेटेड विद द फ्यूचर यूनिवर्सिटी एंड वी हैव केम अप विद द बेस्ट। Yes, PK sir, but your question is what is difference between the stochastic RSI and RSI? देखो, stochastic RSI, it is a combination of the stochastic and RSI both. It gives you both are the momentum based indicator, और ये आपको क्रॉसओवर देगा। RSI is a single line which will be giving you the direction of the trend. Are you understanding, PK sir? But here you will be getting the crossovers also, like the stochastic. So it is a combination of both. Yes, Akshay sir, Sharma sir, welcome to the bootcamp, sir. That's wonderful. Looking forward to you on the 23rd September, sir. Yeah. Gursesh, you can just confirm that. Yes, Yes. you can take both the indicators, PK sir, and can check it. Don't worry. Yeah, Sharma sir, Gursej will be approving you, and yeah, once again, welcome to you all in the bootcamp session. See, the offer which we have came up with this, the course which we have came up, it's just amazing, sir. It's a still deal, that is for sure. Yes, Arup sir, support a resistance zone. It is an area or a line. Yeah, definitely it is a zone, because see, if the price is facing, this is the daily time frame, यहाँ पे price पहले रुका था मंथली चार्ट पे, सो डेफिनेटली इसके आगे पीछे मतलब थोड़ा ऊपर नीचे भी अगर आपको रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहा है, देन यू कैन कंसिडर दैट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, Manish sir, commodities are the monthly contracts. No, they are monthly contracts. There are few commodities which are having the 3 month contract also. Can we get only 3 candles if we choose monthly? No, sir, you need to go with the continuous chart. आपको बहुत अच्छे से कैंडल मिलेगी यहाँ पे, जैसे कि कंटिन्यूअस चार्ट पे आप जाओगे तो आप पूरा आगे पीछे का देख पाओगे, मनी सर। ओके, yes, now then you will be getting the same chart as I am showing you. I have showed you people the monthly chart, correct? What should be considered to buy, options or futures? Both are amazing, sir. Definitely futures are better than options as a beginner. और आप लोग mini contract में भी try कर सकते हो. You can try it in options. Option also it gives amazing results, so you don't need to worry. Yeah, welcome Tushar sir to the bootcamp. That's wonderful. Looking forward to you in the September 23rd. Yes, Gurse, just confirm the members as well. Yes. Yeah. Right. Yeah, let's go to the buying part of the strategy and we'll be having the revision, Manish sir. If you want me to repeat again. Yes, but sir, welcome to you also. Looking forward to you all in the bootcamp, sir. We are having amazing liquidity, सत्यनारायण सर। देखो एक सिंपल बात है, अगर ये क्रूड ऑयल का चार्ट है और हम लोग एनजी का चार्ट देख रहे थे, यहाँ पे देखो एनजी का चार्ट है, दिस इज अ नेचुरल गैस चार्ट। Options are having enough liquidity, Himanshu sir. Let me show you the example. Can you all see this? Can you all see this is a natural gas chart and we have taken the recent example. Shall I show you the option in this? Do you all are interested for that? Come on, tell me. Do you want to see some recent example or the live तो नहीं बोल सकते, recent ही बोल सकते, आज तो market चालू नहीं है, right? So yes, let me show you. या जस्ट अ मिनट। देखो यहाँ पे हम लोगों ने एनजी में देखा फ्राइडे के टाइम था एंड हियर इट इज अ डेली रेजिस्टेंस जोन। ये डेली चार्ट का रेजिस्टेंस जोन है। थर्ड पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी इज द स्टोकेस्टिक आरएसआई, मानो सर, एंड द वॉल्यूम। ओके,
You can trade in the up stocks, Vishnu sir. You can trade in up stocks. क्रूड ऑयल में भी देखेंगे, पर एनजी का रिसेंट चार्ट है भरत सर, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो वही देख लेते एक बार. सी दिस इज अ नेचुरल गैस चार्ट. यहाँ पे हम लोगों को अच्छा खासा शूटिंग स्टार मिल रहा है. एंड इफ वी थिंक इट इज अ good sense, Akshay sir want the link for the payment. You can start with as low capital as a 10,000. Okay, you can start with a very low capital. आप 10,000 से भी start कर सकते हो. Can you all see the shooting star? It is a natural gas chart. It is a Friday's chart. And here you people can see that the high made by this candle is 201. अगर यहाँ पे हम लोग सेल कर रहे हैं और मुझे फ्यूचर में नहीं ट्रेड करना है, पर मुझे ऑप्शन में ट्रेड करना है, और yes, for an example, 201, I am thinking that the price is going to go downward from 201. Then I am sharing you one shortcut. Now listen carefully. You go and open the MCX website. Come on. Any platform is okay, sir. सभी प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हो कमोडिटी में, एंड इट इज 100% लीगल, तो उसके बारे में बिल्कुल टेंशन मत लो आनंद सर. नाउ कैन यू ऑल सी दिस इज, आई एम जस्ट गोइंग टू द मोस्ट एक्टिव पुट्स एंड कॉल ओवर हियर. यहाँ पे मैं मोस्ट एक्टिव पुट्स एंड कॉल पे जा रही हूँ. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स द मोस्ट एक्टिव पुट्स एंड कॉल ओवर हियर and go in the most active puts and call. As we were looking for the natural gas और हम लोगों को लग रहा है कि एनजी में प्राइस नीचे जाएगा, you will have to select options over here. You will have to select a put as you were looking for the downward journey. You select the natural gas from here and click the show button. आपको कोई ऑप्शन या you don't need to go with the put call ratio. You don't need to go with the option chain. I am giving you the shortcut. Just see this, and here I am getting the major volumes in the 200. Here I am getting the strike prices, and these are the volumes. Now 200p is having the major volume. I can go with the 200p क्योंकि मुझे लग रहा है कि 200 से नीचे तो प्राइस जाएगा, correct? Now I am showing you people the live. I am just opening this natural gas 200p. Now look here. Just look here, natural gas 200, और मैं उसका चार्ट दिखाती हूँ आपको उसी दिन का. This is a 200p. Just check the chart and just go to the hourly chart. Okay. Yeah. Now as we will be taking before 4 hours, as we'll be taking buy entry. पहले तो हम लोगों को बहुत सस्ता मिल रहा है, मतलब 8,000 में आप लोग पोजीशन ले पाओगे. The low is 6.65 and within a 3-4 hours it has made a high of a 10.10. उसने 4 पॉइंट का प्रॉफिट दिया है थोड़े ही टाइम में. Just see the natural gas chart here. It has given a almost within the afternoon from 6 p.m. to night. It has given a almost a 10 points of profit, and in the option it has given from 6 p.m. to night, it has given almost 4.5 points of profit. Isn't it amazing? 11.30 from 6.65, 5 points of profit. मतलब 10 पॉइंट अगर आपको फ्यूचर में मिल रहा है तो 5 पॉइंट आपको ऑप्शन में आसानी से मिल रहा है. 1 पॉइंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज गोइंग टू गिव यू 1250 रुपीज ऑफ द प्रॉफिट, और आप उसको खाली 6,000 में ट्रेड कर सकते हो. Isn't it amazing? Can I get a quick replies from all of you? Are you all understanding about the liquidity in the option? It is too good. Just start your journey with commodities. Overthinking is the sign of what I would say, over analysis is the sign of the paralysis. What do you all say? इसको सीखना स्टार्ट करो, सीखोगे तभी तो पता चलेगा. The basic thing is that the people don't know about this. Just start working on it. 1 point of profit or loss in natural gas is going to give you 1250 rupees of the profit. It gives amazing results in the options also, where you can trade with a very low capital. और ऑप्शन में सबसे बड़ा फायदा वो है कि 1 पॉइंट का प्रॉफिट जो आपको 1250 जो फ्यूचर में मिल रहा है, the same sort of profit you will be getting in the options also. Profit potentials are the same in options and futures. Is that clear? Am I getting am I missing on anyone's question? Come on, Gursit, we can have one quick round of the question and then we can go to the buying part of the strategy.
Yes, ma'am. So any questions, queries, or doubts, you can type in the chat box, or we can unmute you and you can ask your questions directly. Yeah, let us go to the buying part of the strategy now. Ma'am, Ravi sir wants to unmute. So, Ravi sir, you can unmute. यस अनुज सर, आपको आप रात को 10 बजे के बाद भी ट्रेड कर सकते हो, 10:30 बजे के बाद भी ट्रेड कर सकते हो, आप कर सकते हो। वी कैन सेल इट आफ्टर दिस रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, वही स्ट्रेटेजी रजा खान सर, वही स्ट्रेटेजी जो मैंने समझाई वही यूज करके आप सेल कर सकते हो सर। Please take questions at the end. Yeah. Let us go to the questions at the end otherwise. Yeah, come on, Ravi sir. Please put up your questions. Yeah, good evening, ma'am. Am I audible to you? Yeah, you are audible. You can just switch on your camera so that it would be easy for me to understand. राइट मैम। मैम मेरा एक डाउट है, क्रूड ऑयल का चार्ट जो भी आपने शो किया था ना, एक बार उसको ओपन करोगे? लिसन केयरफुली, आपकी जो स्ट्रेटेजी है ना उसमें हम लोग स्टोकेस्टिक आरएसआई को लास्ट में यूज कर रहे हैं, जस्ट फॉर द डबल कंफर्मेशन। स्टोकेस्टिक आरएसआई को देख के आप बाय सेल नहीं करोगे, उसके क्रॉसओवर देख के आपको बाय सेल नहीं करना है। यू विल बी चेकिंग द इंपॉर्टेंट लेवल्स। सेकंड थिंग, यू विल बी चेकिंग द रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। थर्ड थिंग, यू विल बी चेकिंग वेदर द स्टोकेस्टिक आरएसआई इज आल्सो गिविंग द क्रॉसओवर। अगर इसके क्रॉसओवर के हिसाब से अगर बाय सेल करोगे तो पागल हो जाओगे, तो बहुत ज्यादा एंट्री एग्जिट मिलेंगे। तो उल्टा मत ये करना बस केवल लास्ट में सपोर्ट के लिए है, राइट? पहले वो देखो कि वो सपोर्ट है कि नहीं। आप कहाँ की बात कर रहे हो? इज इट एट द सपोर्ट जोन? जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट जोन है, ये डेली चार्ट का सपोर्ट है, उसके साथ साथ वी गॉट अ हरामी पैटर्न, उसके साथ साथ क्रॉसओवर भी मिला है, तो दूसरे कैंडल में आप बाय करो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पर उल्टा मत देखो, वरना तो मजा ही नहीं आएगा। यू कांट वर्क ऑन दैट। गॉट इट। वन मोर थिंग मैम, जो ये हम रिवर्सल कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो स्टॉप लॉस कुछ ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं, आप नहीं। आराम से एंट्री जब भी लो ना, जब भी जैसे कि ये रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये हैमर बना है, राइट? ये अच्छा खासा सपोर्ट है, मंथली चार्ट का सपोर्ट है, ये क्रूड ऑयल है। सो यस प्रणय सर, वेलकम टू द बुट कैंप, दैट्स वंडरफुल। गुड सेज, यू कैन जस्ट कंफर्म एवरीवन मल्टीपल क्वेश्चंस ऑन द चैट विंडो। तो जिन लोगों ने भी दोज हु आर द पार्ट ऑफ द बुट कैंप, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द बुट कैंप सर, and looking forward to you on the 23rd. Please, good say, just give them confirmation. See, now all of you just see, I'm also explaining you the buying part of the strategy. मैं साथ साथ में आप लोगों को buying part समझा रही हूँ। See, why this is a support zone, correct? It is a good support zone. It is a monthly support zone, and along with the support zone, you are getting here it was a bullish engulfing pattern। दूसरे दिन वहीं पे प्राइस आ रहा है, अच्छा खासा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, उसके साथ साथ स्टोकेस्टिक आरएसआई क्रॉसओवर भी दे रहा है। इट इज अ सपोर्ट ऑफ द मंथली चार्ट। नेक्स्ट कैंडल, ये कैंडल में आप लोगों को बाय करना है। नाउ व्हेनेवर यू गो फॉर अ बाइंग एंट्री, डोंट बाय इट एनीवेयर हियर, वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। ज्यादातर थोड़ा बहुत प्राइस रिट्रेस करता है, एंड दिस लो विल बी योर स्टॉप लॉस। सो योर स्टॉप लॉस विल बी मिनिमम एंड मैक्सिमम विल बी योर टारगेट। इफ यू विल प्लान योर एंट्री एब्रप्टली, ये कैंडलस्टिक पैटर्न मिल गया और यहाँ पे ऊपर कहीं पे भी बाइंग कर लिया लाइक 5636, देन इट इज नॉट गुड। Wait for the retracement, make a buy entry at a 5580, put in the prior orders। जनरली 50 to 60% तो रिट्रेसमेंट करता ही है प्राइस नीचे के साइड। सो योर स्टॉप लॉस विल बी मिनिमम। यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है, जैसे कि 5580 इज एंट्री एंड द स्टॉप लॉस इज ऑलमोस्ट नियर बाय 5520, तो 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है, बट द टारगेट इज आल्सो रियली गुड। कैन यू सी दिस? हाँ, ये जो बुलिश एंगल्फिंग बनी है, बुलिश एंगल्फिंग हैमर के बाद में, हैमर की बात कर रही हूँ, ये हैमर हैमर के बाद, हैमर हैमर लेकिन जो क्रॉसओवर हुआ है वो हैमर के नेक्स्ट जो एंगल्फिंग है उसमें हुआ है, तो उसके बाद वाले इवेंट लेने हैं। हाँ, तो दूसरे कैंडल में आप बाय कर सकते हो, एंड along with the buying the crossover is also happening, so it is giving the entry along with the hammer candlestick pattern। See, this is a hammer candle, sorry, this is a hammer, उसके बाद में यहाँ पे हैमर बनी है, एंड ऑलरेडी इट इज सपोर्टेड विद द रेड वॉल्यूम, बट इट इज एट द गुड सपोर्ट जोन। पहले तो ये सपोर्ट बहुत अच्छा है, दिस इज द सपोर्ट ऑफ द डेली चार्ट, एंड यस्टरडे आल्सो
एक दिन पहले भी यहाँ पे बाइंग हुआ है. प्राइस इज ऑल्सो गिविंग यू द डाइवर्जेंस along with this. Price is making, just a minute. Price is making almost same bottom बन रहा है. बट ऑसिलेटर को आप देखोगे तो ये बहुत अच्छा डाइवर्जेंस दे रहा है. इट इज मेकिंग अ हायर लो विच इज क्लियरली टेलिंग यू दैट बायर्स आर मोर इनटू. करेक्ट. यू आर गेटिंग द डाइवर्जेंस. यहाँ पे हैमर पैटर्न भी बना है, दूसरी कैंडल के साथ साथ क्रॉसओवर भी मिल रहा है. यहीं पे आप बाय कर सकते हो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के. एंड द टारगेट, द फर्स्ट टारगेट वेयर द प्राइस हैड स्टॉप्ड ओवर हियर 5681. द सेकंड टारगेट विल बी दिस, जहां पे पहले प्राइस रुका था. एज पर दैट रेजिस्टेंस जोन, this will be the second target. We are getting the second target. We got the third target also. राइट. और मैम Okay. इसमें एक डाउट था, जो आपने डेली चार्ट में जो ट्रेंड लाइन बनाई थी ना रेजिस्टेंस वाली, डेली चार्ट से could you please convert to daily? Yeah, why not? 1 minute. सभी के क्वेश्चंस लेंगे. देखो ये ग्रीन लाइन है, वो डेली चार्ट की है कैंडल. दिख रहा है बराबर? थोड़ा जूम इन करना. जूम इन करो. ठीक है. ग्रीन लाइन, कैन यू सी इट? एंड कैन यू सी दिस ब्लू पार्ट? ये रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैम, रेजिस्टेंस लाइन जो ऑरेंज कलर की है. हाँ, वहां पे पहले प्राइस रुका था ना, तो 2-3 दिन तक. तो दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन एंड दिस इज अ गुड सपोर्ट जोन. इज इट क्लियर? और जूम इन करो. Check this. It's a beautiful support zone as well as the resistance zone. Are you all understanding? It's a really good question. There are other questions also. Ravi sir, are you clear with it? यस मैम. यार इसको देखो एक बार, 1-2 दिन चार्ट देखो, बहुत मजा आएगा. द टेक्निकल्स आर रियली वर्किंग वेल. Gold, yes. Why there is a difference in the charts between Zerodha and investing.com? Shooting star in Zerodha, it's a hammer. Definitely investing.com जो है उसमें टाइम फ्रेम में थोड़ा फर्क है अरुण सर. बिकॉज investing.com it is working half an hour delayed. See by, I'll be just opening the crude oil over here. It हमारा कैंडल यहाँ पे 9 बजे स्टार्ट होता है. That it is something like a 8:30 to 9:30. So there will be a little bit of the variation to this. So don't worry for that part. Okay. Here, this is a crude oil chart. It is taking little time to load. जिंक और गोल्ड देखना है सभी को, तो ये भी देखेंगे. सी दिस इज अ गोल्ड चार्ट. इफ यू वांट टू चेक द गोल्ड चार्ट, गोल्ड अक्टूबर फ्यूचर. So here is a gold chart. Gold also gives amazing result as per the technicals. यहाँ पे टेक्निकल के हिसाब से ये सभी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी चलती है. Multiple questions I can see. Will be taking all the questions and I have also explained you people the buying strategy along with the questions. Right? So सभी लोग यहाँ पे ध्यान रखें and will be doing that. Can you advise what all will be covering in the boot camps? अरे सुंदर सर, अभी थोड़ी मैंने पहले वही तो मैंने समझाया, अभी फिर से समझाओ सुंदर सर. Yeah, Gursich can share his screen and can share the curriculum to Sundar sir. He has some question regarding the curriculum. And see, this is a gold chart. Just see the beauty of the gold chart. Ma'am, I have shared my screen, so maybe it won't be visible. I'll just, sir, this is the curriculum. You can take a screenshot. I've also sent you the photo of this, and I'll be stopping sharing so ma'am can explain further. Yes, ma'am. I'll have to share my screen once again. Yes. Can you all see this is a gold chart? It is a daily chart of the gold. Come on, I need a replies from all of you. अरे खाली गोल्ड का चार्ट देखो तभी आपको पता चलेगा कि ये टेक्निकली कितना अच्छा रिजल्ट देता है. This is the daily chart of the gold. And do you all remember the budget day? Come on, how many of you are remembering the budget day? किनको गोल्ड देखना था? Gold is a beautiful example. All of you remember the budget day? कौन सी तारीख थी? चलो बताओ. Which date was it?
No, not a 4th June. Wrong answer, Anand sir. First fact, wrong answer. थोड़ा गूगल भी कर लो। मैंने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है कि गूगल वालों का आंसर सही नहीं रहेगा। कम ऑन। 23rd July, perfect. 23rd July was the budget day, perfect. And yes, you can do that, प्रवीण सर, पर यहाँ पे डिफिकल्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं इजी चीजें सिखा रही हूँ तो आपको डिफिकल्ट क्यों करना है? बट यू कैन डू दैट। See, 23rd July was a budget day and the custom duty was reduced in the gold, right? We all know that. Everyone is aware about that. पर 23rd July के पहले यहाँ पे आप चेक करो, is it a good support zone or resistance zone of the daily chart? Is it a good resistance zone of the daily chart? यहाँ पे पहले प्राइस रुका था, फिर से यहाँ पे रुका है, correct? It is a very good resistance zone. We got a shooting star on 17th July. Can you all see this? On the 17th July, I'm just adding volume as well as I'll be adding the stochastic RSI to this. Now, on the 17th of July, can you all see the stochastic RSI crossover as per the shooting star at the resistance zone of the daily chart? Come on, tell me. और उसके साथ साथ हम लोगों को यहाँ पे डाइवर्जेंस भी दिखा है। All the members, those who were asking me about the gold, come on, listen. Price is making higher high. Sorry, oscillator is making high. Yeah, a slight divergence, I would say. Not a great divergence, but अच्छा खासा crossover मिला है. And 18th July, one can go for a sell for your positional trade. 19th, 20th और 23rd को क्या हुआ? देखो, सब targets मिल गए. That means before the event was there, before 3 days, many members were into sell. Are you all understanding this point? Isn't it amazing? Come on, tell me. एक एक दिन में लोगों ने 5000 पॉइंट का प्रॉफिट निकाला है. Isn't it a beautiful example? The example is just in front of you. Is it so difficult to get it? अगर आप हर रोज एक गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो, if you are looking at this chart on a daily basis, is it so difficult to get this? यहाँ पे डबल टॉप थोड़ी है सर, ये तो almost like a triple top है, and the price has consolidated multiple times, Rahul sir. It is moved in the channel, correct? It is a strong resistance zone. We got a shooting star, we got a wonderful downward journey, and just see the beautiful target is done. Come on, why I'm not getting replies? Isn't it a beautiful example of the shooting star at the resistance zone in the daily chart for your positional trade? It is on the 17th of July, before we got the result on 23rd July, before the event. So what do you think? You all should start your journey with commodities. Commodity में trade करना, commodity एक commodity select करके उसमें काम करना start करो. Within 3 to 4 months, you people are going to thank me for the same. अरे लॉस कैसे होगा प्रजेश सर? Anybody will not be trading without the stop loss, right? कोई भी stop loss के बिना trade करेगा? Can you trade with the stop loss? If you are in the wrong position, that would be the little bit of the stop loss. That's it. And yes, don't forget to thank me after 3 to 4 months. Start your learning journey and earning journey in commodities from today onwards. Welcome to the bootcamp, Ankit sir. That's amazing. Those who are already part of the bootcamp, definitely they will be getting the recording, sir. And yes, looking forward to you all in the session. Yes, Sundar sir, I'm completely new and don't know even ABCD of this. Sundar sir, तो कभी तो start करोगे ना? At least somewhere you will have to start. Maybe you may face a little bit issues in the beginning. You are getting the recordings, you are getting everything. Start it, sir. Don't think too much. Start karo. Believe me, you are going to enjoy it. Okay. Don't worry.
long wicks triggering the stop loss. BSP sir, the stop loss is there, no? So your stop loss should be that important place in the chart where if it gets hit, देखो अगर मैंने यहाँ पे stop loss लगाया, यहाँ पे मैंने sell किया, मेरा stop loss ये है, right? अगर ये stop loss मेरा hit होता है, that means it has broken the resistance zone. That means I'll be getting the uptrend. Am I right, sir? So stop loss is that important place in the chart. If it gets hit, then there will be a trend reversal. Are you understanding, sir? So you can go with another trend. So yes, welcome to Bootcamp Tarun, sir. Looking forward to you on the 23rd. Yeah, you will be getting recording, sir. Definitely, even I am excited. So don't worry for that. Gursit, you can just take care of that. Future safe है या option? फ्यूचर से स्टार्ट करो अंकित सर, यहाँ पे ऑप्शन भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है. डोंट कंपेयर इट विद इक्विटी. इक्विटी में फ्यूचर ऑप्शन के साथ कमोडिटी को मत कंपेयर करो, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट. कमोडिटी इज द मैनिपुलेशन ओवर हियर इज ऑलमोस्ट नियर टू nil, sir. Don't worry. Are you understanding, BSP, sir? So after proper set of learnings, the potential of trading in commodities is unlimited. Sky is the limit. पर सीखने के बाद बिना सीखे तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ. There is a big disclaimer over here. After proper set of learnings, I would say the potential is unlimited. Anuj sir, आपके लिए मैंने जिंक ओपन किया. And I want to show you people few examples in all the charts. Can I go with that? See, this is a zinc chart and just see the beauty of momentum in the zinc. कौन बोल रहा है कि जिंक में मोमेंटम नहीं है? चार्ट तो देखो जिंक का. What a beautiful levels on a daily basis. It is giving 8 to 9 points of profit, and 1 point of profit or loss is going to give you 5,000 rupees of the profit. Yes, Vyas sir, welcome, Bootcamp sir. Looking forward to you in the bootcamp, sir. Yeah. आशीष कुमार सर, मेरा कल 12,000 का प्रॉफिट था क्रूड ऑयल में. ओके, सेम ट्रेड में क्वांटिटी इंक्रीज किया तो 7,000 का लॉस हो गया. तो क्यों किया इंक्रीज सर? क्यों इंक्रीज किया सर? डोंट बी ग्रीडी, ओके, एंड यू विल हैव टू फॉलो द डिसिप्लिन. दैट इज इंपॉर्टेंट आशीष कुमार सर. कम ऑन, अभी आपने क्या किया वो तो नहीं पता है मुझे, पर या पर क्यों किया सर? रनिंग ट्रेड में करना तो बहुत बड़ा पाप है सर. यू कांट कीप ऑन चेंजिंग. एक बार ट्रेड ले लेते हो, देन यू कांट चेंज द टारगेट एंड शिफ्ट योर टारगेट्स, राइट सर? यू शुड नॉट डू दैट. That's wonderful, Rahul sir. That's amazing feedback, sir. You have learned a lot of things in the course. You people should put up your feedback. Please don't miss on that. I want everyone's feedback. At least you all can do that. Gursit, you can just check it with the question of the Rahul sir. Yeah. Sundar sir, looking forward to you in the bootcamp. Welcome to you, sir. Indrapal sir, that's wonderful, wonderful.